Completed my chocolate mithai class Diwali theme. We had 663 students till now which I have trained, and today I had 4 students, so 667 students have been trained for this, especially this class. It's my most value for money, Paisa Vasool class, famous, most popular class. It's the best class to do, especially during festivals. So this time it's my Diwali theme that we have done, and I'm glad I have one very new student, completely new to chocolate world, right? Yes. Okay, and of course into baking also, it's completely new for her. आज हमने शुरुआत I had 3 students online, one from Dubai, Vashi, and one from Chennai. So basically today's class, where we have done a lot of theory initially. The theory was all about what is chocolate compound, what is couverture, how do you understand between the two, which types of brands to use, what types of flavoring is to be done, the types of coloring to be done, and the right way of coloring. That's very important, the correct methodology that you need to follow when it comes to doing your right colors, and flavoring also. Everything doesn't require essence. We are doing a lot of natural flavors also with natural ingredients. We are not using flavors everywhere. Shelf life is very good till you're not using a milk product. Got it? So try to do this in your Diwali hampers, because these will have a longer shelf life, can be prepared 15 days in prior. ओके, so इस तरह से हमने 12 फ्लेवर्स चॉकलेट मिठाई की आज दिवाली थीम से हमने इसको लॉग्स में भी बनाया. सो आज हमने लॉग शेप में दिया है, अनार के शेप में दिया है, और दिए के शेप में भी दिया है. सो दीज आर ऑल आर themed Diwali themed chocolates, and yes, काजू माचा चीज केक. दिस लुक्स द बेस्ट. ओके, इन द काजू कतली शेप. एंड इसकी रैपिंग भी दिखाई कि किस तरह से इसको रैप करना है. ओके, दीज आर ट्रांसपेरेंट रैपिंग्स. किस तरह से एक बॉक्स को पैक करना है. ये 15 कैविटी हार्ड बॉक्स. ना लिसन, हार्ड बॉक्सेस आर एक्सपेंसिव देन पेपर बॉक्सेस. सो वट एवर इज योर चार्जेस, आई टोल्ड यू, चार्ज दैट अलॉन्ग विथ प्लस वट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, रिबन रैपिंग, फ्लावर, हैप्पी दिवाली टॉपर. हाँ, दैट कंप्लीट्स योर थिंग. अच्छा, दिवाली बार भी डालना है. एक इधर घुसा दो. एक पूरा हो गया. हाँ, अगर आपको फुल 15 का मिठाई डालना है और फिर दिवाली बार ऊपर से डाल दो, वो भी अच्छा लगता है. नाउ कमिंग टू आवर ग्रैंड हैप्पी दिवाली, दैट्स हाउ यू स्टिक योर रिबन लगा के यहाँ पे आप हैप्पी दिवाली का टैग डाल दो. नाउ दिस इज आवर ग्रैंड दिवाली बॉक्स, ओके, विथ चॉकलेट मिठाईज. Now how do you see how the filling looks inside? Okay, stunning, royal. Okay, lots of things inside. 12 चॉकलेट मिठाई, 5 चॉकलेट बार, शुभ दिवाली का ड्राई फ्रूट सीड्स एंड फ्रूट का बार. Okay, with 2 beautiful tea lights. Now coming to your 12 flavors: lavender, pan, moringa, rajbhog, no rose petals, मावा, मोरिंगा विथ माचा, कैजू चीज केक, रस मलाई, रबड़ी मलाई, ठंडाई रोज, रासबेरी, कलाकंद, रोज एंड आलमंड. ओके, चॉकलेट इंक्लूजन बार, 5 चॉकलेट बार. पान इसके लिए क्योंकि मैंने सोचा कि चलो फेस्टिवल में ये बहुत अच्छा लगता है, सो 5 चॉकलेट बार भी कर दिया. ये आपकी बहुत अच्छी से ड्राई फ्रूट की बार बन गई, सॉलिड 100 ग्राम की. ओके, दिस इज हाउ योर बार लुक्स. 2 tea lights, and now close the box. Happy ribbon, happy Diwali tag. Clear? Pricing discuss कर ली. किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है. मार्केटिंग करने के लिए डेफिनेटली यू आर द बेस्ट पर्सन टू मार्केट. हाउ? प्रैक्टिस, प्रमोट, प्रैक्टिस, प्रमोट. Every day one picture on your story status should be there. Okay, that's how you will choose your boxes. 15 कैविटी बॉक्स, 12 का बॉक्स, 15 का बॉक्स. मैंने काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाए हैं. 9 का बॉक्स, 24 का बॉक्स. ओके, एंड देन यू कीप योर प्राइसिंग रेडी कि अगर 9 का बॉक्स का इंक्वायरी आया, दिस इज द प्राइस. कीप योर प्राइसिंग, योर बॉक्सेस का मेन्यू सेट. ओके, देन यू प्ले अराउंड योर 6 बेस्ट टॉप फ्लेवर्स, आप उसको बना के रख दो. ओके, कहीं अगर कम रेंज वाले लोग हैं ना, उनको ये देना है. हैवी रेंज वाले उनको वो 20 ग्राम वाला देना है. Okay, so this is how we have to make our chocolates in such a way कि you are able to manage with all types of customers, budget friendly customers also, premium customers also. ठीक है, so this way we completed our chocolate mithai class with a theme of Diwali. Oh, this
इज योर बार. ये दिवाली बार है जिसमें मैंने बादाम और ऑरेंज डाल के एक बनाया है. दिस गिव्स अ वेरी फेस्टिव लुक, स्पेशली विद द शिमर ऑन इट. एंड द पैकिंग एज आई शोड यू, वो एक बुक आता है, वो बुक में भी आप डाल सकते हो ये. एनी क्वेश्चंस? हाउ वाज द क्लास योर फर्स्ट टाइम विद मी? Very nice. Like starting में जो information थी, that is very knowledgeable and very useful. I think I will try to make some more chocolates at home. At least I will start making from the home products. Yes, we whatever is have. available in the Yes, house. Yes, yes. always. That's always better. Yeah. Yes, Drishti. I liked it a lot, and there's a lot of information. I'm definitely going to, I'm very intrigued to do the moringa because right now, like I said, I have to organize to arrange all of these points. Yes, I yes, can correct. do photos. So you know what I'm going to do? I'm going to go through all of this, and first thing tomorrow, because I have the moringa and the white chocolate at home, and Perfect. I have the nuts. So Perfect. I'm going to start with that, and Hmm. then I will, as and when if I have any doubt, I will come back. Sure, sure. And yes, and I must say that you know what, doing the class with you is not just a one-time thing because so many times I have come back to you asking you, doubts about the same recipe, and you always are very, very helpful. That's one reason that I like doing the class with you. Thank you so much. See, after class support is very strong. I can always vouch on all my students that all those who have done my class right from 10 years to 12 years back also, my old students are still thick with me. The only reason is because I respond to them. I reply to their queries. If I don't reply, they will never come back to me. They will never feel that I have gone through a lot of classes which I never got response from the teachers, or you can say the so-called chefs. Okay, they never reply to you. They will never even give you any support back behind the class. But I don't follow that because I feel till you don't will make and show me, I'll be unsuccessful. So you have to get successful while when you do it and show it to me that yes, I'm able to do it. That's my success, right? Okay, thank you girls. Those who wish to join my next class, DM me. The next class will be in October. Thank you.